Assalamualaikum everyone. Welcome back to your favorite YouTube channel called Maths with Baji, and today we are going to discuss what step deviation method. Take it easy. It's very simple and easy. देखो मीन का ही एक और पार्ट बता रही हूँ मैं. डिफरेंट मैथड, जैसे हमने शॉर्टकट मैथड डिस्कस किया है ऑलरेडी और डायरेक्ट मैथड भी डिस्कस किया है. सो लाइक सिमिलरली वी आर गोइंग टू हैव स्टेप डेविएशन मैथड फॉर फाइंडिंग आउट मीन. और वो कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं. सो लेट्स सी. See, mean के लिए step deviation method. See, if in means according to your question, if it is restricted, ये direct method से करना है, shortcut method से करना है, और step deviation method से करना है, तो आपको वो ही follow करना है, ठीक है? And if the restrictions are not there, you can follow any of these, जो भी आपके available quantities हो, ठीक है ना क्वेश्चन पे, और जो आपका दिल चाहे आप यूज कर सकते हो. लेकिन अगर है तो आपको वो ही फॉलो करना है. तो लेट्स हैव अ लुक एट स्टेप डेविएशन मेथड. इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? मीन इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ टी डैश अपॉन समेशन एफ इनटू आई. अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. some prefer d dash, some prefer this as a d dash. It can be t also, it can be u. It means they can take any alphabet over here like T or D, whatever they are, it will refer to x minus a upon I. Okay, if I would have written a plus summation f t upon summation f into I, then this t and d dash would have been the same. Okay, so what is t or d dash or u, what we can say, that is x minus a upon I. We will be calculating x, a is assumed mean, and I is the difference of the class intervals, upper limit minus lower limit, and then we will get the value of I. अब step deviation method also आपकी जैसे shortcut method यूज होता है वैसे आपकी कैलकुलेशन क्या करता है, सिंपलर कर देता है. ओके, एंड इट्स वेरी नाइस. और चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं. सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेप डेविएशन मेथड स्टार्ट्स नाउ. लेट्स बिगिन. Now we have a question based on what? Step deviation method. So let me read out the question for you. See, it says find the mean using step deviation method. It can be find the mean of the following distribution or calculate the mean. It can be anything, but step deviation method restrictions are there right now. Okay, if it would not have been any sort of restrictions while using any method, we can use any of the method according to our convenience. Okay, so let's see what we have. We have class intervals in the question given and the frequency. Okay, class interval or CI means the same. Okay, now for using step deviation method, we know. Okay, let me just I think it's clearly visible to you all. Okay, fine. So what we will do, first of all, this is summation f will come. We will be writing mean equals to a plus summation f t upon summation f into I. Okay, this thing is there. What is t? Here I have taken variable t. It can take any variable, d dash, u, whatever convenient. So t will be what? T will be x minus a upon I. First of all, we need to know what is I. I is that size of the class interval. Okay, upper limit minus lower limit will be the value of I. So 28 minus 20 is, what is the difference? 8. Next, we will check with all the class interval. Even for 36 minus 28, 8 will come. 44 minus 36, 8 will come. So we can see their difference is same and it's not varying. So the I value of I is what? I is what? 8. So we can say this is the size of the class interval, or we can say this is the difference of the class interval. So okay, whatever you want, you can say that. Now we know f will be there. So first we will calculating summation f. So summation f कर लो भाई. 16 plus 9, 25, 25 plus 5, 30. Okay. Now what do we need? We need to calculate x. And you all know how we can calculate the value of x. Those who don't know, for them once again I am going to tell you this. Class interval, both the class intervals, you will be adding both the class intervals and then dividing it by 2. Like we have 20 plus 28 divided by 2. That will be 48 divided by 2 gives 24. Okay.
This one I have calculated. Now I won't be calculating it. So 24 will come. Then 36 plus 28 gives what? Tell me. Anyone? Oh, we are not live right now, so I asked you like that. So I'll be doing it. Don't worry. So we have 28 plus 36 gives 14 ka 1, and there will be 6, 34, and it will become 32, and 44 plus 36, 80, it will give 40, and 52, 44, 6, 9, 96, and it will be 48. Okay, this is our value of x. Still, now what is a? A is assumed mean. It can be any value of from x, and I'll be taking this time 32 as an assumed mean. You can take any value from x as an assumed mean. So I'll be taking assumed mean as what? A equals to 32. I'm taking a equals to 32. Okay, I hope it is clearly visible on the board. Yes, it is visible. So now I'll be calculating what? T, value of t, that is what? X minus a upon I. So I'll be doing all these things calculation here only, so that you can see. Let me clean this. Okay, so first we have x is 24 minus 32 upon 8, that will be minus 8 upon 8 gives minus the 1. Okay, and 32 minus 32, that will be 0. Okay, and then we have 40 minus 32 upon 8, that will be again 1, and 48 minus 32 gives upon 8, that will be 16, I think. 8 plus 8 gives 16, 16 divided by 8 gives 2. Okay, so ये आ गया t की वैल्यू. ओके, so summation t नहीं आएगा. अभी क्या करना है, क्या बताया? एफ टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एफ टी, चलो दिस वैल्यू, दिस इज वैल्यूज ऑफ t and into f, so it will give minus 6, 0, 9, 10. ओके, और समेशन कर लेते हैं एफ टी का. दैट विल बी व्हाट? 13. दैट विल बी 13. चलो वैल्यू पुट अप करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज. ओके, सो व्हाट इज ए? मैं इधर ही रहती हूँ. एज्यूम्ड मीन हमने निकाल लिया है 32 प्लस समेशन एफ टी कितना आया है? 13 अपॉन समेशन एफ है 30 इंटू आई इज 8. इसको पहले सेपरेट फॉलो फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है ना, इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं. सो क्या होगा, मैं 32 में ऑलरेडी हमें वैल्यू पुट अप करनी है. इतनी बात तो साफ हो गई कि हमारी वैल्यू जाएगी 32 से अबव आएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है. ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अब फ्रैक्शन पार्ट को अपने हिसाब से जैसे दिल चाहे सॉल्व कर लो, जरूरी नहीं है रफ मेन पार्ट में ही दिखाना है उसको. सो हम यहाँ करेंगे, मैं तो यहाँ कर रही हूँ. इंटू 8 भाई, 13 इंटू 8, 8 3 से 24 पर 2 लगा, 8 में 8 और 10, और मैं इसको 3 से और डिवाइड कर देती हूँ. अभी बताऊंगी 3 से क्यों कराए, 3 से ही बताऊंगी. 3.4 3 4 6 6 विल कम, सो इट विल बी रिपीटिंग. तो टोटल ये आ जाएगा हमारा 32 पॉइंट प्लस 3.466. ये कंटिन्यू करता चला जाएगा. ठीक है ना, इस बात को छोड़ दो, ये रफ सेक्शन है. लेट मी क्लीन दिस सो कोई कंफ्यूजन नहीं हो. ओके ओके, इतना आ गया. सो अब हम इसको एड अप करेंगे ना, तो व्हाट विल इट गिव? मीन इक्वल्स टू व्हाट? 35.466 लिख सकते हैं. 47 लिख दो, राउंड अप कर दिया मैंने. ओके, और अगर मैं इसको भी और राउंड अप करना चाहूँ तो इट कैन कम 36 इन ऑल द केस. अब देखो ये क्या चीज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी, स्टेप डेविएशन मेथड में डोंट गेट कंफ्यूज. सम बुक्स में सम राइटर्स और सम दे प्रेफर के दे यूज वेरिएबल टी, दे यूज, लेकिन अगर स्टेप डेविएशन मेथड है तो बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा. ओके, that is assumed mean plus summation f t upon summation f into I.
आई इज द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स, और टी कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज x माइनस ए अपॉन आई, और आई एक्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्लास इंटरवल्स को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, मींस उनका एवरेज ले लो, ठीक है। एंड वैल्यू फाइंड आउट कर लो, टी एक्स माइनस ए अपॉन आई, आई ए इज एज्यूम्ड में, एज्यूम्ड में हम कुछ भी ले सकते हैं, लो वैल्यू पुट अप करो एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ये मीन का पार्ट निकल कर आ गया। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द थिंग्स। मीन के ऑलरेडी हम काफी पार्ट बना चुके हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट मीन और अर्थमेटिक मीन, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट, अगर इट वुड हैव बीन रिटन फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग step deviation method, so that in that case don't get confused, how we will find out arithmetic mean, we only know how to find out mean, this will be there in order to confuse you। समझ आ रही है बात, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात समझ के चलो कि कैसे आपको क्या फाइंड आउट करना है। ओके, सो मीन का जितना है ऑलरेडी काफी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो देयर स्टेप डिविजन मेथड। आई होप कितना समझ में आ रहा है। सो कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन शेयरिंग सच स्टफ, एंड thank you for watching. Allah Hafiz.